Hello बच्चों, good evening. My name is Dr. Amit Parihast and today I am going to talk about financial statement, that is final accounts. Final accounts सबसे important chapter है आपके class 11th में और आज final account में हम especially trading account के बारे में बात करने वाले हैं. So let's begin the session without any delay. Final accounts. By name it's clear, final accounts. So it is prepared at the end of the accounting year to know the financial position of the business so that the business financial information can be shared with the internal and external stakeholders, under which we prepare the income statement and position statement. So when I am talking about the income statement, so here it means trading account and profit and loss account. When I say position statement, so it simply means the balance sheet. Alright. Now, before starting this chapter, we like to understand the capital expenditure and revenue expenditure, capital receipt and revenue receipt. Now, what is a capital expenditure? So, the non-recurring expenditure whose benefit is derived by the business for more than a year is called a capital expenditure. It includes amount spent or liabilities incurred to acquire or improve any fixed assets or acquiring any legal rights or first time expenses incurred to make fixed assets workable is called capital expenditure. Now we can have some example. Purchase of machinery, building purchase, furniture purchase like this. Expenses incurred to acquire patents, incurred for getting any asset ready to use like installation expenses, carriage, brokerage, whatever additional expenses you pay for this. And it is a capital expenditure and hence it should be recorded into the asset side of balance sheet. अब बाद में देखोगे कि ये जो capital expenditure होते हैं वो asset side of balance sheet में आते हैं. In a layman language, it is very easy to understand. Buying an asset is called a capital expenditure. Buying an asset is called a capital expenditure. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? जब भी कोई आपने एसेट परचेज करा होता है, एडिशनली व्हाटएवर एक्सपेंसेस यू पे, सो दैट कम्स अंडर द कैपिटल एक्सपेंडिचर. जस्ट टेक एन एग्जांपल. आपने कार खरीदी, तो कार जब खरीदते हो तो उसका क्या आप चेक करते हो? एक्स शोरूम प्राइस एंड ऑन रोड प्राइस. व्हाई ऑन रोड प्राइस इज डिफरेंट फ्रॉम एक्स शोरूम प्राइस? बिकॉज एक्स शोरूम प्राइस में बहुत सारे एक्सपेंसेस उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं, जैसे रोड टैक्स, registration charges, insurance. These are the few expenses, maybe more. So these are the few expenses which are not included in ex-showroom price. So that is the reason why the ex-showroom price of a vehicle is comparatively cheaper than the on-road price of that vehicle, right? तो इन सबको include कर दोगे तो ये आपका capital expenditure बन जाएगा, ठीक है? Now, revenue expenditure. The recurring and routine nature expenditure which are incurred for operating the business smoothly and which help to maintain business earning capacity are called revenue expenditure. Example, expenses incurred for producing finished goods such as direct expenses, purchase of raw material and other expenses as rent paid, salary paid to the staff, repairs made. The benefit of these expenses last in 1 year. Right, these expenses are shown in the debit side of income statement. When I say income statement, it means trading account or profit and loss account. So बहुत सिंपल है. कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने कर लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर लिया. अब इसका जस्ट क्या है, समराइज्ड फॉर्म क्या है? बाइंग एन एसेट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, मेंटेनिंग एन एसेट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, बहुत रेयरली अकर्ड होता है. And as far as the revenue expenditure is concerned, ये recurring nature का होता है, ये day to day basis पे incurred होता है. Just take an example. आप buying the goods is a revenue expenditure. Buying an asset is called a capital expenditure. Rent paid for the premises purchase, building purchase is a capital expenditure. Rent paid is a revenue expenditure. So these are the various things, these are the various examples in order to differentiate the capital expenditure and revenue expenditure. Now capital receipt. Capital receipt are those irregular receipts. When I say irregular receipt, it means non-recurring receipts that don't affect profit or loss of the business.
It either increases the liabilities raising by raising of loan, or reduces the fixed assets by sale of fixed assets. So it will be shown in the balance sheet. Okay. Now revenue receipt. Revenue receipt are received in the normal and regular course of the business, like receipt from sale of goods and rendering the services to the customers. Income from non-operating business activities, like income from investment, interest and dividend received and rent received, commission and other fees received from non-operating business, etc., also comes under the revenue receipt only. These receipt increases the profit and shown in the credit side of trading or profit and loss account. Now, so basically here I am going to talk about briefly about the revenue part. So in a revenue there are two types of things. Revenue expenses I am going to talk about, and second I am going to talk about the revenue income. So revenue expenses or income को आप समझो. Revenue expenses can be of again classified into two categories. They are related expenses, related, or I can also say operational expenses. Related or operational expenses. And second one is the non-related or non-operational या non-operating expenses. Now this related expenses can again be classified as direct expenses and indirect expenses. Similarly, income can also be classified into two categories. Related income, we can also call it operational income, or non-related income, or non-operating income, I can say. Related operational income can again be classified into two categories. First one is direct income and indirect income. Just a minute. Indirect income. So this is the division of revenue expenses and revenue income. Initially, revenue expenses can be classified into two categories. They are related or operational expenses, non-related or non-operational expenses. And then related or operational expenses can be classified as direct expenses and indirect expenses. Direct expenses which is related with the factory expenses. Direct expenses is also called factory expenses, which is all about concerned with RMC, WIP and FP. Now what does it mean? RMC stands for raw material consumed, WIP stands for work in progress, FP stands for finished product. So while start from the procurement of the raw material till the finished product, whatever expenses are there, so they are called direct expenses. We can also call it manufacturing expenses. We are also call it manufacturing expenses. Once the goods is being manufactured, जैसे goods manufacture हो जाता है, फिर आपका indirect expenses comes into the picture. Now indirect expenses can again be classified into two categories. First one is which is related with office and administrative expenses. Office and administrative expenses. And second one is selling and distribution expenses.
or non-related or non-operational expenses means non-recurring expenses. I can take few example like loss on sale of assets, direct income. Only one income is direct, they are called sales. Once the goods is manufactured, so if the goods is being sold in the market, so sales is the best example of your direct income. Indirect income can be like, suppose if you are getting, apart from your day to day work, if you are receiving any rent, if you are receiving interest on your fixed deposits, so interest received, if you are getting any commission, so these are your indirect income. Now, if I am talking about the non-related income or non-operating income, like profit on sale of assets, profit on sale of assets could be the good example. यही सारे टर्म्स हमारे ट्रेडिंग में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. Now let's talk about the trading account. So it is a nominal account. Trading account, it is a nominal account prepared in the books of the business to record all the direct expenses in the debit side and direct income on the credit side. Now you all aware with the fact कि direct expense क्या होता है, direct income क्या होता है. So direct expenses need to be recorded into the debit side of your trading account and direct income need to be recorded into the credit side of your trading account. If the sum total of the credit side is greater than debit side, then there is a trading profit. This is called profit, and this profit is called gross profit. And if the reverse situation happen, like sum total of debit side is exceeding the sum total of credit side, then there is a loss, and this loss is called gross loss. So this is the format. So in this side we are recording the expenses because it is a very good example of nominal account. So all the expenses, I mean when I say expenses, so we all record the direct expenses in the debit side and direct income on the credit side. So first of all, we like to start with the opening stock. Opening stock refers to stock in the beginning. Then purchases. When I say purchases, so there are two types of purchases, cash purchases and credit purchases. So make the total of this and this becomes total purchases. And if there is any purchases return को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं returns outward. So purchase return or returns outward is given, then it's need to be subtracted from the purchases, then it would be called net purchases. Then all the direct expenses are there. When I say direct expenses, these are the manufacturing expenses like wages, freight inward, carriage inward, factory fuel and power, factory rent. These are few expenses. The name of the direct expenses. Sales can be cash sales or credit sales. So this becomes the total sales. When you subtract the sales return and the other name is returns inward from the total sales, you'll come to know about the net sales. Again, closing stock is there. So if the credit side is exceeding debit side, then there is a gross profit. When the total of the credit side is exceeding the debit side, then there is a gross profit. And if the reverse situation happen, like sum total of debit side is exceeding the sum total of credit side, then there would be a gross loss. अब इसका जर्नल एंट्रीज बच्चों बहुत सिंपल होता है. पहले जर्नल एंट्रीज को देखते हैं और फिर इससे कैसे सीख सकते हैं वो भी मैं आपको अभी समझाऊंगा. जर्नल एंट्रीज देखो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस टू वेजेस टू कैरेज इनवर्ड टू ऑल अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. अब ऐसे ही नहीं होगा, लेकिन आप इसको देखो, इससे आप कर सकते हो बहुत इजीली. देखो ये किसका लेजर अकाउंट हम बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का लेजर अकाउंट बना रहे हैं ऑफ मेसर्स XYZ लिमिटेड. सो जब भी हम जिसका भी लेजर अकाउंट बनाते हैं उसके लेफ्ट साइड में जो डेबिट साइड में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हम क्रेडिट करेंगे व्हाइल ट्रांसफरिंग फ्रॉम द लेजर टू द जर्नल. लेजर से जब जर्नल में आप ट्रांसफर करोगे तो जो भी आइटम्स आपके डेबिट में अपीयर हुआ है उसको आप क्रेडिट में ट्रांसफर कर दोगे. नाउ यू माइट हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि ठीक है, डेबिट में जो भी आइटम्स है उसको हमने क्रेडिट जर्नल के क्रेडिट में डाल दिया, लेकिन डेबिट में क्या डालेंगे? ऑफ कोर्स जिसका अकाउंट बनाते हो, जैसे आप इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो तो ट्रेडिंग अकाउंट को कर दोगे. तो एग्जाम्पल क्या हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ठीक है. इसी तरह जो क्रेडिट साइड में आपके पास सेल्स आया है या क्लोजिंग स्टॉक है, ये किस साइड में है? क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. व्हाइल ट्रांसफरिंग फ्रॉम द लेजर
टू द जर्नल, ये जो क्रेडिट में है इसको क्या करोगे आप, डेबिट में कर दोगे। तो सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। And when there is a gross profit, so gross profit is being transferred to the profit and loss account. तो gross profit कहाँ आ गया आपका, यहाँ आ गया, और आपने क्या लिख दिया, टू P&L account लिख दिया। So the journal entry should be trading account debit to profit and loss account if there is a gross profit. In case of gross loss, so the entry should be profit and loss account debit to trading account. So this is the way how you can remember the journal entries as well from this ledger account. So the journal entries is trading account debit to opening stock, to purchases, to wages, to carriage inwards, to all other direct expenses. Here I haven't mentioned any purchases return, because for purchases return I have put an extra entry, that is purchases return account debit to purchases account. Actually this is the closing entry of purchases return, because purchases return का हर टाइम जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। जब हम इसको परचेज में एडजस्ट करते हैं तो एंट्री शुड बी परचेजेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। So that is the reason why I have only written purchases over here, purchase return को मैंने यहाँ mention नहीं किया। Next one is sales account debit to sales return। यहाँ here I am trying to adjust sales return in the sales, and now the next entry should be sales account debit, closing stock account debit to trading account. When there is a gross profit, if there is a gross profit, then the journal entry should be trading account debit to profit and loss account. If there is a gross loss, so the journal entry should be profit and loss account debit to trading account. Now formula. So the main formula is cost of goods sold and gross profit. Today since we are doing trading account, तो trading account का जो main important formula है वो cost of goods sold है, gross profit है। लेकिन आप इसको और भी अच्छे से देखोगे तो supporting formulas भी होते हैं। So let's start from the supporting formula and let's start with the very basics. So first of all, you need to understand the total purchases. Definitely we'll cover cost of goods sold as well, because this is the main formula, but we like to start with the basic wala cheez. So when I say total purchases, so it includes the cash purchases and credit purchases. When I say total sales, so it includes cash sales and credit sales. When I say net purchases, so it means total purchases, minus purchases return. Purchases return. When I say purchase return, so it means obviously returns outward. So this is connected with this. Now, fourth one is net sales. When I say net sales, it means total sales minus sales return. When I say sales return, so it means returns inward. तो इस फॉर्मूले में देखा टोटल परचेज कैसे निकालते हैं, टोटल सेल्स कैसे निकालते हैं, नेट परचेज कैसे निकालेंगे और नेट सेल्स कैसे निकालेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके बाद हम सीखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द एडजस्टेड परचेजेस। एडजस्टेड परचेजेस, ठीक है। सो एडजस्टेड परचेजेस एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आई विल टेक साइड बाय साइड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, adjusted purchases, opening stock, add net purchases. With the help of supporting formula, you will be able to understand what is net purchases. When I say total purchases minus purchase return will give you the net purchases. Less closing stock will give you the adjusted purchases.
In order to ascertain the cost of goods sold, the formula is opening stock add net purchases plus direct expenses minus closing stock. आप दोनों फॉर्मूले को देखो तो एक बहुत इजीली चीज नोटिस कर सकते हो कि द डिफरेंस बिटवीन एडजस्टेड परचेजेस एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देयर इज ओनली वन डिफरेंस ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस. एडजस्टेड परचेजेस के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक करना होता है, बट व्हाइल कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड द फॉर्मूला इज ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक हमारे को करने की जरूरत है. अब with the help of this formula, can I say cost of goods sold if they have given you in the question? So can I say cost of goods sold minus direct expenses would be your adjusted purchases, right? Or can I say adjusted purchases plus direct expenses would be equals to your cost of goods sold. Next one is from the net sales, if you could subtract the gross profit, so that would be equals to cost of goods sold. Or I can say net sales, and if gross loss is there, so if you could add the gross loss in net sales, you'll come to know about the cost of goods sold. And the last formula is calculation of gross profit or loss. So the formula is net sales minus cost of goods sold and while calculating this, if the answer comes in positive, then there is a gross profit, and if the answer comes in negative, then there would be a gross loss. All right, so moving to the next. Now this is the question. I have taken few question also. So this is the question. Prepare a trading account from the following particulars for the year ended 31st March 2017. तो इसमें से आपको देखना है कि कौन कौन से एक्सपेंसेस को, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आपको ट्रेडिंग में लेना है और कौन कौन से एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको हमें नहीं लेना है. सिंस अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं करा है तो कैसे पता चलेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? सो वेरी सिंपल थिंग, those expenses which you feel that it is related with the factory manufacturing unit or maybe related with the procurement, maybe related with the purchases or before sales, तो ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं. Anything which is related with the office, when I say office, so it must be related with the office and administrative, selling and distribution expenses, or any expenses which is after sales. So that expenses should not be taken into consideration. तो इसमें ओपनिंग स्टॉक लोगे, यस लेंगे, परचेजेस लेना है, सेल्स लेंगे, वेजेस लेंगे, कैरेज इनवर्ड लेंगे, कैरेज आउटवर्ड नहीं लेंगे. व्हाई कैरेज इनवर्ड वी कैन कंसीडर एंड कैरेज आउटवर्ड नॉट? Because carriage inward means carriage on purchases. While procuring the raw material, whatever extra amount you paid on account of the transportation, that is called carriage inward. But carriage outward means after sales. तो ये जो after sales वाला है ये यहाँ हम नहीं लेंगे. Manufacturing expenses लेंगे, purchase return definitely लेंगे, sales return definitely लेंगे, gas, fuel and power definitely लेंगे, dock charges definitely लेंगे, factory lighting definitely लेंगे, ऑफिस लाइटिंग हम नहीं लेंगे बिकॉज समथिंग विच इज रिलेटेड विद द ऑफिस लाइटिंग शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. एंड क्लोजिंग स्टॉक यहाँ वैल्यू छुपा हुआ थोड़ा सा 6 लाख की वैल्यूज है, उसको भी हमें कंसिडर करने की जरूरत पड़ेगी. सो इसको मैं प्रिपेयर करके एक बार आपको फटाफट समझा देता हूं. सो दिस इज द फॉर्मेट. Trading account in the books of
in the books of for the year ended. For the year ended क्या है? 31st March 2017. अब जब ये फॉर्मेट देखोगे तो कुछ चीजें ट्रेडिंग अकाउंट में फिक्स्ड होती हैं, कुछ चीजें ट्रेडिंग अकाउंट में फिक्स्ड होती हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ चीजें जो फिक्स्ड है वो क्या है? ओपनिंग स्टॉक। ये सबसे पहला आइटम होगा जो हमें ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना ही लिखना है। सबसे पहले वैल्यू अभी हम लिख लेंगे। दूसरा परचेजेस, जैसे कि इस क्वेश्चन में परचेज रिटर्न भी मेंशन है, डेफिनेटली मैं वैल्यू भी लिखने वाला हूं, लेकिन जैसे परचेज रिटर्न मेंशन है तो आपको यहां एक जो मेन अमाउंट है वो यहां लेना है और उसमें से परचेज रिटर्न यही सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो फाइनल वैल्यू होगा उसको हमें यहां दिखाना है। सो दिस इज एक्चुअली ट्रीटेड एज अ योर इनर कॉलम। सेल्स आपको सबसे पहले यहां लिखना है एंड जैसे क्वेश्चन में हमने देखा कि उसमें से सेल्स रिटर्न भी है, तो इनर कॉलम में सेल्स की वैल्यू लिख के और इसमें से सेल्स रिटर्न को हम सब्ट्रैक्ट करने के बाद दो वट एवर फाइनल वैल्यू दैट इज द वैल्यू ऑफ नेट सेल्स वो हमें आउटर कॉलम में दिखाना है। तो ये कंपलसरी है। इसके बाद आपकी मर्जी की डायरेक्ट एक्सपेंसेस में पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा वो आप आराम से कर सकते हैं। तो मैं एक एक वैल्यू थोड़ा सा ले लेता हूं। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 2,50,000 का, सो ओपनिंग स्टॉक इज 2,50,000। Purchases is 7 lakh and purchase return is 22,000. Purchases here is 7 lakh and purchases return is of 22,000. So इसको डिडक्ट कर लें तो this would be 6,78,000. Sales is 18 lakh and sales return is 36,000. Sales is 18 lakh and sales return is 36,000. So this should be 17,64,000. And yes, closing stock भी मेंशन है और closing stock 6 लाख रुपीस का मेंशन है। Now, आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कोई किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हो। तो हमारे पास डायरेक्ट ऑर्डर में क्या है? वेजेस है 2,06,000 का, कैरेज इनवर्ड है 34,000 का, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है 248 का। तो इसको हम लिखते जाते हैं। टू वेजेस, टू कैरेज इनवर्ड, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, now we have to write the value also. So wages is 2,06,000, wages is 2,06,000, carriage inward is 34,000, manufacturing expenses is 2,48,000, gas, fuel and power, dock charges, factory lighting, these things should be taken into consideration. Gas, fuel and power, dock charges, and factory lighting. Gas, fuel, power 75,000, dock charge 8,000 and factory lighting 96,000. 75,000, 8,000 and 96,000. So that is it. Now we can just make the total of the credit side and debit side and we can easily calculate. So इसको calculate कर लेते हैं. So basically it is clear कि आपका जो credit side का total है वो कितना आ गया? 17 lakh plus 6 lakh. So 23 lakh 64,000 is the total of your credit side.
ये रफ नोट में हम निकाल लेंगे। डेबिट साइड का एक बार टोटल निकाल लेते हैं सो दैट वी कैन इजीली कंपेयर कि क्रेडिट साइड इफ एक्सीडिंग डेबिट साइड और डेबिट साइड इफ एक्सीडिंग क्रेडिट साइड। सो लेट मी कैलकुलेट द क्रेडिट साइड का टोटल। इसका भी मैं टोटल फटाफट निकाल देता हूं। सो just a minute. 2,50,000 plus 6,78,000 plus 2,40,000 plus 2,48,000 plus 83,000 plus 96,000. Okay, so the total of the debit side is 15,95,000. So here you can easily notice that the credit side का total income is greater than the total of your expenses. और इसका जो difference होगा, definitely that difference is your gross profit. So 7,69,000 would be the right answer. The difference between two is 7,69,000. So here I can write 2 gross profit carried on 7,69,000. और यहाँ दोनों साइड जो हायर बैलेंस है 23,64,000 का should be recorded in both the side. So this is it. This is the way how we can prepare the trading account. Now let's talk about a few questions जो formula based questions है. जैसे ये क्वेश्चन ले लिया हमने, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्लोजिंग स्टॉक है, वेजेस है, सैलरी है, सेल्स है, एडजस्टेड परचेजेस गिवन है और निकालना क्या है हमें, निकालना है हमें ग्रॉस प्रॉफिट, निकालना क्या है ग्रॉस प्रॉफिट। तो सबसे पहले जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है ग्रॉस प्रॉफिट का। तो इन ऑर्डर टू असर्टेन द ग्रॉस प्रॉफिट हम फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं, फॉर्मूला होगा नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। So basically sales already हमारे पास given है, sales is already given in the question and sales return नहीं given है, इसका मतलब यही हमारा net sales है। तो 6,88,000 is the net sales. Now the question is cost of goods sold. तो cost of goods sold को calculate करने के लिए, cost of goods sold को calculate करने के लिए, in short I have written COGS. So cost of goods sold को calculate करने के लिए we have adjusted purchases. और जैसे कि मैंने बताया था एडजस्टेड परचेजेस में इफ यू कुड ऐड द डायरेक्ट एक्सपेंसेस सो इट वुड बी इक्वल्स टू योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एडजस्टेड परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल गिव यू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो हियर द एडजस्टेड परचेजेस इज ऑफ रुपीज 5,50,000 एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज वेरी सिंपल। सो हियर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेजेस, तो ये कितने का है 40,000 का है। So the total amount comes out to be like 5,90,000. 5,90,000. So net sales minus 5,90,000 of cost of goods sold. The difference is your gross profit. So that there is a difference of 6,88,000 minus 5,90,000. So here the difference is 92,000. I'm so sorry, the difference is 98,000. My bad. So this is your gross profit. All right.
Next one is calculate gross profit from the on the basis of the following information. Purchases हमारे पास दिया हुआ है 680 का, रिटर्न्स आउटवर्ड दिया हुआ है 30,000 का, कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है, कैरेज आउटवर्ड दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, एंड इट इज गिवन दैट 3/4 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर रुपीज 6 लाख. वेरी गुड क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करने के लिए सिंस ऑल द इंफॉर्मेशन आर गिवन तो वो हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे. Cost of goods sold equals to opening stock plus net purchases plus direct expenses minus closing stock. So now opening stock is not given in the question, fair enough. So let's start with the purchases. So purchases is 6,80,000 minus returns outward of 30,000. It will give you the net purchases. Purchases minus purchase return. Carriage inward and wages are the good example of your direct expenses. You should not consider the carriage outward क्योंकि ये आपका indirect expenses हो जाएगा. It is something which is related with the sales. तो इसलिए इसको कंसिडर नहीं करेंगे. सो कैरेज इनवर्ड का 20,000 एंड वेजेस का 50,000 शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड दीज आर योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. सो 6,50,000 प्लस 70,000 will give you 7,20,000. Now as per the question it is given कि you are going to sell only 3/4 of the goods for rupees 6 lakh. So in order to ascertain the gross profit, the formula should be net sales minus cost of goods sold. So here the net sales is 6 lakh and we are going to sell only 3/4 of the cost of goods sold, that is 3/4 of 7,20,000. So 6 lakh and 3/4 of this is 5,40,000. If you could calculate, so 5,40,000. So it means the gross profit is of rupees 60,000. Very good question we have. Next one is calculate the gross profit and the cost of goods sold from the following information. Net sales 9 lakh, gross profit is 20% on cost. ये बहुत सिंपल लगता है जब जैसे नेट सेल्स गिवन हो और आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स गिवन हो तो इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट. सो एक्चुअली इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस देयर आर टू वेज. एक होता है यूनिटरी मेथड और एक हो सकता है डायरेक्ट मेथड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिटरी मेथड से हम ट्राई करते हैं, फिर डायरेक्ट मेथड के बारे में भी बात करेंगे. सो बेसिकली इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट. सो cost we have to find. So cost is not given in the question. So let the cost be 100. So your selling price must be 120 and selling price is 9 lakh. So you can consider cost as X and you can easily get the value of cost of goods sold. So this is 6, 5. So 7.5 lakh is your cost of goods sold and it is very easy to calculate the gross profit also. So gross profit is net sales minus cost of goods sold. So 1,50,000 is your gross profit. But suppose this kind of question if asked in the MCQ and they are only talking about the gross profit, कैसे निकालोगे और आपके पास बहुत कम टाइम होता है, 1 मिनट का टाइम होगा, तो डेफिनेटली ये वाला मेथड जो आपके लिए होगा लेंदी हो सकता है. तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत सिंपल सा एक तरीका है. इफ द प्रॉफिट गिवन ऑन कॉस्ट, if the profit given on cost is equals to profit given on sales.
So what is the formula? 1 by n on cost equals to 1 by n plus 1 on sales. So suppose half on cost would be equals to 1/3 on sales. 1/3 on cost equals to 1/4 on sales. 1/4 on cost equals to 1/5 on sales. 1/5 on cost equals to 1/6 on sales. Now if this fraction is being converted as percentage, so ये कितना हो जाएगा? 50% on cost would be equal as 33 1/3% on sales. If 33 1/3% on cost is equals to 25% on sales. 25% on cost is equals to 20% on sales, and 20% on cost is equals to 16.67% on sales. So in this question, they have given you net sales and the profit is given on cost. So we can easily compare and we can easily calculate with the answer. Like in this question, if you could compare, so gross profit is given on cost, that is 1/5 on cost. And here they have given you sales ka price, so it should be equals to the sales, that is 1/6. So if you could calculate 1/6 of 9 lakh, तो ये कितना हो जाएगा? 1,50,000. So you can easily get to know about the gross profit. And similarly, in order to ascertain the cost of goods sold, the formula is net sales minus gross profit. So here the net sales is 9 lakh and gross profit is 1,50,000. So you can easily calculate cost of goods sold also. So there are two approaches how you can calculate this thing. So thank you so much. All the best. Happy learning. Keep smiling.